हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू वेदांतु कॉमर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, वेयरिंग मास्क एंड यू हैव गॉट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. यस, वैक्सीन लेना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ वैक्सीन ले लेना बच्चों. चलिए शुरू करते हैं. Today we are going to study about demand. We are starting a new chapter, that is demand analysis. And in today's class we'll be discussing about meaning and definition of demand. This, students, is a chapter of Maharashtra State Board, that is chapter number 3A, demand analysis. So students, do not forget to subscribe to the channel. इसके अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे. कौन सा वीडियो कब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, without fail, please register yourself, please subscribe yourself to the Vedantu Commerce. Let us start with your 12th standard chapter, chapter number 3A, demand analysis. Let us first start with meaning and definition of demand. Now, generally when we hear the term demand, तो हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरा डिमांड है. If I want something, that is my demand. बट स्टूडेंट्स, वो तो एक आम आदमी के भाषा में हुआ, वो तो एक लेमैन टर्म्स में हुआ, ऑर्डिनरी टर्म्स में हुआ. बट इन इकोनॉमिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड, डिमांड इज समथिंग मोर देन जस्ट वांट. इट इज समथिंग मोर देन जस्ट डिजायर. इट इज समथिंग मोर देन योर इच्छा, तमन्ना, आरजू. In economics, demand is desire for a commodity backed up by the ability to pay and willingness to pay. So these three things, these three prerequisites are very important to meet in order to be called as demand. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ट्रू और फॉल्स. इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज डिजायर, फॉल्स. In ordinary language, demand is desire, true. In economics, demand is a desire for a commodity backed up by the ability to pay and willingness to spend at a given price during a period of time. Is demand true? ठीक है. तो क्वेश्चन क्या आ रहा है वो बराबर देखना, उसके बाद जवाब देना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. सो देयर आर 3 कंडीशंस. कमोडिटी का डिजायर होना चाहिए, अबिलिटी होना चाहिए एंड विलिंगनेस होना चाहिए. ना व्हाट इज अबिलिटी? अबिलिटी, डिजायर का मतलब तो हमें पता है, कोई चीज खरीदने का इच्छा. मुझे नया फोन खरीदना है, वो मेरा इच्छा है. करेक्ट. सो दैट इज माई डिजायर, ओनली डिजायर. नाउ आई चेक्ड माई बैंक बैलेंस. अगर मेरे पास पैसे है, विच मीन्स आई हैव द अबिलिटी टू परचेज द फोन. And if I'm willing to spend for the phone, then we say that there is willingness to purchase or willingness to spend. Now let us understand the basic difference between ability and willingness. अब मेरा बहुत इच्छा है बच्चों की, मुझे ना iPhone 13 Pro चाहिए, 13 Pro Max, whatever it is, the best phone version of 13 मेरे को चाहिए. तो डिजायर तो है. I saw my bank balance, बैंक बैलेंस भी है, 2-2.5 लाख रुपया है बैंक में, एंड दोनों किडनी भी सलामत है. मतलब अबिलिटी तो है आईफोन खरीदने का. बट ना बच्चों, मुझे ना वो वेस्ट लगता है. आई फील कि मेरे लिए आईफोन नहीं बना है. आई एम ओके विद अ सैमसंग, अ वन प्लस, आई एम वेरी हैप्पी विद इट. तो मेरे लिए डिजायर है, अबिलिटी है, बट विलिंगनेस नहीं है. तो क्या मैं वो कमोडिटी का डिमांड कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी. सो डिमांड इन इकोनॉमिक्स हैज 3 prerequisites. prerequisites का मतलब होता है ये तीनों चीज चाहिए ही चाहिए, डिजायर, अबिलिटी एंड विलिंगनेस. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पुअर पर्सन. अ पुअर पर्सन विशेस टू बाय अ कार. डिजायर फॉर अ कमोडिटी है, बट डज ही हैव द अबिलिटी? ही डज नॉट हैव द अबिलिटी. सो अ बेगर has the desire but has no ability, so he will not be able to demand the commodity. Let's talk about a miser. Who is a miser? Miser is a कंजूस मक्खी चूस, जिसके हाथ से एक पैसा नहीं जाता.
उसे हम बोलेंगे माइजर। तो ये जो माइजर है, उनको भी डिजायर आया कि यार आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, अबिलिटी भी है, देखो अंकल के पास बहुत पैसा है, बट सिंस ही इज अ माइजर ही विल नॉट बी विलिंग टू स्पेंड। तो विलिंगनेस नहीं है, डिजायर है, अबिलिटी है, बट विलिंगनेस नहीं है। Next is a businessman. Let us say this businessman has the desire for a commodity, has the ability also, and has the willingness also. Out of the three people, he will be the only one who will be able to demand the commodity as per economics, because he has a desire, ability, and willingness to pay. तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसे एनालाइज कीजिए एंड देन आंसर देना, अदरवाइज योर आंसर्स विल बी रॉन्ग। सो इन ऑर्डिनरी सेंस डिमांड मे बी जस्ट डिजायर, but in economics demand is the desire for a commodity backed up by the ability to pay and the willingness to pay at a given price during a given period of time. ठीक है, फिर हम बोलते हैं डिमांड इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मीन्स व्हाट? मामा, चाचा, फूफा, फूफी? नहीं, रिलेटिव मीन्स दैट डिमांड इज रिलेटेड टू, इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस एंड टाइम। सो इसका मतलब क्या होता है? अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, अगर टाइम चेंज होगा तो भी डिमांड चेंज होगा। मतलब प्राइस एंड टाइम हैज अ इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड, दे विल चेंज द डिमांड। सो हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। जब भी कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, हम वो कमोडिटी कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में डिमांड करते हैं। हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, डिमांड डिमांड बराबर 6। सो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। सो एक बड़ा एक घटा, एक बड़ा एक घटा, ये सो मतलब दे बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इन इकोनॉमिक्स वी कॉल दिस इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स, बिकॉज दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड घटेगा, जब जब प्राइस घटेगा तब तब डिमांड बढ़ेगा। देन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कभी घर के लिए शॉपिंग करने गए हो, हाँ, तो मम्मी बोलेगी अरे घर पे चीनी खत्म हो गई है, जरा बाजार से 1 किलो चीनी तो लेकर आ। तो वो जो 1 किलो आप चीनी लाने वाले हो, आप शुगर लाने वाले हो, वो शुगर क्या आपको 1 साल चलेगा? नहीं नहीं नहीं, 2 साल तो पक्का चलेगा, नहीं चलेगा। 1 किलो चीनी शायद 1 हफ्ता या 15 दिन चले। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 साल के लिए चीनी खरीदने जा रहे हो तो आपको ज्यादा चीनी लगेगा, ज्यादा शक्कर लगेगा। करेक्ट एवरीबॉडी? So when the time period for which you are purchasing is more, you will demand more of a commodity. And if the time period for which you are purchasing a commodity is less, you will demand less of that commodity. Yes? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, demand is a dash term. Answer has to be relative term. Related to what? तो related to price and related to time. Two things, price and time. ठीक है? Now, what are the 4 essential elements of demand? Quantity of a commodity which a buyer is willing to buy at a given price during a given period of time. Please understand that demand statement is always incomplete without the reference to price and time. Why is it incomplete? Because अगर price change होगा तो demand change होगा, time change होगा तो भी demand change होगा। तो हमें क्या चाहिए कि अगर एक इंसान का हम डिमांड पढ़ रहे हैं, it has to be with respect to a price and a time. So demand is a relative term which means that it is dependent on 2 things, price and time. Clear everybody? 100% clear? पक्का? चलिए, तो what is demand? Demand is the desire for a commodity backed up by the willingness to pay and the ability to pay at a given price during the given period of time. Bolo swaha. Yes or no?
So what is demand? Demand is a desire for a commodity backed up by the willingness to pay and the ability to pay at a given price during a particular period of time. Bolo swaha. Barabar che. So when we talk about price and demand, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand, demand with respect to time. When the time period is more, demand will be more. When the time period will be less, demand will be less. ठीक है, समझ में आया? हाय अमृता, वेलकम टू द क्लास. चलो, सो अब बारी आती है क्विज की. फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन्स. In economics, demand means what? Desire for a commodity, ability to pay, willingness to pay, कि all of the above. चलो जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. Come on everyone. Is it A, B, C or is it D? Yes, the answer is D. All of the above. Very good everybody. Next question. Demand is related to what? Price, time, either price or time, or is it both price and time? Yes, Amrita, I remember you. What is the answer, Amrita? The answer is D, both A and B. Very good. Excellent. Very nice. चलो आगे. Demand is related to price and time. True or false? तो बहुत easy peasy lemon squeezy है यार. Is demand related to price and time? True or false? Yes, the answer is true. Very nice. Very good. चलो आगे. So अभी तक क्या आपको कोई डाउट्स है? क्या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए? क्या आपको और असाइनमेंट सॉल्व करने हैं? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिविजन का प्लान नहीं है, तो स्टूडेंट्स आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल. Join us at Vedantu where there are going to be live interactive courses. There are going to be a lot of test series and assignments. There are going to be doubt solving in the class. Yes, students, join us students today and you can get all these for only 8550 when you use the code MTPRO. So use the code MTPRO and you can get this for 8550. So Amrita, why don't you go and take admission? Come on, register yourself for it and trust me, you are going to have an amazing time. We will make economics easy peasy lemon squeezy. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's see the classification of demand. Demand can be classified into two concepts: individual demand and market demand. So when you talk about individual demand, it is individual's demand. So individual demand is demand by a single buyer of a single commodity at a given price during a given period of time. Hi Jayansh, welcome to the class. Good to see you on YouTube. And market demand is demand by all the buyers of one commodity at a given price during a given period of time. So individual demand and market demand are two concepts of demand. Now बच्चों, individual demand of course is a microeconomic concept. What about market demand? Market demand is a microeconomic concept or is it a macroeconomic concept? चलो बताओ. Is market demand a microeconomic concept के macroeconomic concept? You all are telling microeconomics, but why microeconomics? We are talking about all the buyers, no? So the answer should be macroeconomics. Why are you all telling micro? Yes, since we are considering one commodity, market demand is a microeconomic concept. Clear? So individual demand and market demand both are microeconomic concepts. अब समझते हैं डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड का डायग्राम. सो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? वी ऑल नो, वी हैव डन दिस इन यूटिलिटी. Schedule is a tabular representation of two things: price and quantity demanded. So in individual demand schedule, we'll get demand of a single buyer at different prices. So if you observe, when the price falls from 5, 4, 3, 2, 1, demand rises from 1, 2, 3, 4, 5, which means lower the price, higher the demand. जब जब प्राइस घटेगा तब तब डिमांड बढ़ेगा.
So here we have the individual demand schedule, which is a tabular representation of individual demand. ठीक है, which establishes inverse relationship. कौन सा relationship बच्चों? It establishes a inverse relationship between price and quantity demanded. Now when we try to draw the diagram, on the y-axis we have the price, on the x-axis we have the quantity demanded. Since the relationship between price and quantity is inverse, we get a downward sloping curve. We get a downward sloping curve which slopes downwards from left to right. Clear everyone? It slopes downward from left to right. Similarly, market demand is also a downward sloping curve. Why is it a downward sloping curve? Because when the price of the commodity will fall, cumulatively all the people in the market are going to demand more. So in market demand is a total of individual demand. So individual A's demand plus individual B's demand plus individual C's demand. ठीक है? So एक का demand plus B का demand plus C का demand will give you market demand. Correct? So individual A, individual B का total will give you market demand. Clear है? That will also have an inverse relationship, because of which market demand curve is also a downward sloping curve. ठीक है? Easy peasy lemon squeezy. चलो, let us start with the quiz everybody. First question. Demand made by dash buyer refers to individual demand. Few buyers, some buyers, के single buyer. Come on, tell me what is the answer. Demand by how many buyers refers to individual demand? Yes, very good. Demand by a single buyer refers to individual demand. Demand can be classified as only individual demand. True or false? Demand can be classified as only individual demand. Yes, very good. Answer is false. Why false? Because demand is of two types, individual as well as two categories, individual and market. ठीक है? In a typical demand schedule, quantity demanded will vary directly with the price, यानी कि same direction. Varies inversely with price, that is the opposite direction. Come on, tell me, is it A, B, C? Come on, very, very simple. Yes, the answer is C. It varies inversely with price. तो जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड घटेगा, तो जब जब प्राइस घटेगा तब तब डिमांड बढ़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. And let us understand the types of demand. There are 5 types of demand that we are going to study. What are the 5 types? Direct, indirect, joint, composite and competitive. Direct मतलब अब मुझे प्यास लगी, मैंने पानी कंज्यूम किया, मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया. दिस वाटर satisfied my want directly, direct demand. भूख लगी, खाना खाया, want satisfied, direct demand. So whenever a commodity satisfies human wants directly, it is called as direct demand. So all the consumer goods have direct demand. All the consumer goods have direct demand. Indirect demand means what? So there is a boy, he demanded a glass of juice. So when he is demanding a glass of juice, is he demanding only the glass of juice? No. For making that juice, we require land, labor, capital, entrepreneur. Yes or no? So when all these things come together, they produce the juice. Juice has direct demand because juice is going to satisfy his want. But all the factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, they have indirect demand or derived demand, which is a result of direct demand. क्योंकि उसने जूस डिमांड किया, इसके वजह से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का डिमांड हुआ, देयरफॉर इनडायरेक्ट डिमांड. ठीक है? सो एग्जाम में देयर विल बी अ क्वेश्चन, ऑल द डैश हैव इनडायरेक्ट डिमांड, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनडायरेक्टली डिमांडेड और हैव डिराइव्ड डिमांड. ठीक है? देन कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री तो हमें पता है यार, हमने किया है. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? जॉइंट, सजोड़े, साथ साथ.
So if I have a want of driving a car, I require two things. I require a car and I require a fuel. बराबर. कार है बट फ्यूल नहीं है तो चलेगा. कार में रेड बुल डाल के इट विल गिव इट विंग्स डाल के उड़ सकते हैं? नहीं. कार नहीं है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल पीने का, गाड़ी की तरह भागने का, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. सो कार है तो पेट्रोल या फ्यूल वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली अगर पेन है तो इंक रिक्वायर्ड है. अगर पेन है तो इंक नहीं हुआ तो क्या खून से थोड़ी लिखेंगे? अगर इंक है पेन नहीं है तो उंगली डुबा डुबा के थोड़ी लिखने वाले हैं. वी रिक्वायर पेन एज वेल एज इंक बोथ. ठीक है. तो व्हेन टू गुड्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, the important word over here is simultaneous. So when two goods are simultaneously demanded to satisfy one want, it is called as complementary demand. Then composite commodity, ek uses anek. For example, electricity, wood, steel, water, all these have composite demand where we have commodity ek uses anek. ठीक है. देन कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिशन है दोनों में, कोक एंड पेप्सी. आइदर कोक और पेप्सी दोनों खरीदेंगे थोड़ी. आइदर टी और कॉफी, which means they are substitutes of each other. So substitutes have competitive demand. Now how will you distinguish between competitive and complementary? Complementary is always joined by the word and. Car and fuel, pen and ink. But in substitute goods or competitive demand, there is going to be or, tea or coffee, coke or Pepsi. So there are always going to be or in between. Complementary में there will be and, substitutes में there will always be the word or. ठीक है. चलिए क्विज टाइम बच्चों. Substitute goods are known as complementary goods. Is it true? Yes, come on, true or false? Are substitute goods called complementary goods? No, answer is false. They are not called as complementary goods. चलो आगे. When a commodity satisfies the want directly, its demand is termed as derived demand. True or false? Easy peasy lemon squeezy yaar, come on. Yes, the answer is false. Very good, everyone. False because it is called as direct demand, not derived demand. Derived demand is for FOP. Next. Oh my God, that's it for the day. We are done. Super amazing, yaar. So what did we do? We studied the meaning, we studied the definition, we studied the individual demand, market demand, we studied their schedule, we studied their diagrams, and also we studied the types of demand. Super amazing. Students, in the next class, we are going to do determinants of demand. This is a very, 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 very important concept. Do not miss the session. And if you still have any doubts, if you need any conceptual clarity, please join us at Vedantu Pro, where there are going to be many, many mock tests, many, many assignments, and there are more than 1,000 micro courses which will help you prepare for your exams. So, bachcho, please join us. All this was available for 9500, but I am giving you this with the code MTPRO only for H550. So students, register yourself today itself and you can get an opportunity to come on the wall of fame along with our lovely students. Yes, my dear students, do not forget to like, share and subscribe, everyone. I will see you all in the next class. Thank you very much, everyone. Thanks for watching. Bye-bye. See you all.